Hi friends, how are you doing today? I hope you watched that video in which I told you about the 4 new cue cards that the examiners are asking और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर करने जा रहे हैं। फटाफट से देखते हैं क्यू कार्ड क्या है। Talk about an item of art or craft that you made in school. Remember मैंने आपको बताया था वो वाला आइडिया आप नहीं यूज कर सकते कि आप आर्ट क्लासेस लगाते थे। यहाँ पर आपको कुछ बताना है कि आपने क्या बनाया। Cues क्या होंगे? When it was, what did you make? How did you make it? How was the overall experience? तो ऐसे cues आपसे एग्जामिनर पूछ लेता और इसे हमें ध्यान में रखते हुए इन्हें हमें ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी डेवलप करनी होती है। हमेशा कहता हूँ 4-5 आइटम्स अपने दिमाग में रखिए, अगर उनको रिलेट कर लेंगे तो आपका एक तो फ्लो बना रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स और कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं होगी और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए जब आप यंग एज के थे, 6 या 8 या 7 क्लास में थे। अभी यहाँ पर आर्ट आपके स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लासेस ऑर्गेनाइज होती थी और आप ये कहेंगे कि आपको एक आर्ट का असाइनमेंट मिला। असाइनमेंट के लिए आप रेगुलर असाइनमेंट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि समर वेकेशंस थे एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आपको ये वेकेशन में ये एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था, जिसमें करना क्या था, वेस्ट मटेरियल का यूज करके कुछ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल बनाना था। एक्चुअली ये एक अच्छा तरीका था टीचर्स का या स्कूल का टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि वेस्ट नहीं करना चाहिए या वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो मैं जब घर पे आया या इस दौरान जब मुझे ये बनाना था, मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा था। आपने अपनी सिस्टर या मदर के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। She always has some kind of unique and creative idea. So उन्होंने आपको बताया कि आपको एक सिंपल सी चीज बनानी चाहिए, that is a pen stand, जो एक स्टूडेंट को हमेशा चाहिए और later on I can keep it on my study table as well. And I really like the idea क्योंकि इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं थी और मैं बड़े आराम से खुद ही बना सकता था। So I collected the material. तो यहाँ पे कार्डबोर्ड, पेपर्स, जो भी सीजर, आपको ग्लूज वगैरह चाहिए, इन सभी का आपने इस्तेमाल किया, उसको अच्छे से बनाया। अडॉर्न करने के लिए उसको आपने कुछ कलर पेपर्स लगाए, आपने उसको अपना पर्सनल इफेक्ट देने के लिए किसी मैगजीन में से अपने फेवरेट किसी कैरेक्टर की फोटोग्राफ कट करके उस पे लगाई और ऐसे करके आपने जब बनाया तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड द डे यू वेंट टू स्कूल, आपके टीचर को भी वो बहुत पसंद आया। चाहे सभी बच्चे कुछ ना कुछ बना के लाए थे, लेकिन योर टीचर वाज रियली इम्प्रेस्ड विद योर वर्क बिकॉज आपने कुछ बहुत ही सिंपल और ऐसी चीज बनाई थी जो यूजफुल भी थी unlike others, and for that reason she appreciated your work as well. And you can say from there on आपका इंटरेस्ट इतना बड़ा कि अभी तक आप कुछ ना कुछ चीजें घर की वेस्ट मटेरियल से बनाते रहते हैं। If you really like the idea, continue to watch the video as I'm going to share the sample answer of this cue card with you now, and I hope you have already subscribed the channel. If not, please do it right now. The answer is from the Speaking Booster, my book that contains the sample answers of each and every cue card along with the follow-ups and the introductory questions, और उसी में से ये cue card का sample मैं आपके लिए read करने जा रहा हूँ। Well, I have interest in art and craft right from childhood, and in my school days I crafted various items of art. Now I'm going to talk about a pen stand that I made when I was in grade 6th. I vividly remember our art teacher gave us an assignment to complete during the summer vacations. All the students were supposed to craft something useful with this waste materials at home. It was just a way to educate children how to make use of waste in a positive way. I was little confused, and for this reason I took help of my mother. She recommended me to make a pen stand using waste cardboards and other materials at home. I really liked the idea because pen stand was something that I could use practically later on. I collected all the needful material, cardboards, colored papers, scissors and others, and started working on it. I gave it a shape of a rectangular box and pasted colorful papers on it, and to give a personal touch, I pasted the cutting of my favorite cartoon from a magazine. In fact, I also used some beads and glitters to adorn it and give it the finishing touch. Now I was waiting eagerly to go to the school and show my work to my teacher. The day came and everyone brought their work at school.
our art teacher was really happy with students' efforts and she was super impressed with my work as I had made something very simple yet very useful. She appreciated me in front of the entire class and also gave me a chocolate as a small gift. I must say this appreciation further developed my interest in art, and later I made several other things using waste material at home. And how was that? आंसर आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, आंसर आपके लिए थोड़ा छोटा हो सकता है. Never forget to add your personal touch. जैसे मैंने वहाँ पर एक मैगजीन से कटिंग लगा के कर दिया. थोड़ी सी लाइनें अपनी ऐड कीजिए, थोड़ी सी मेरी बाहर निकालिए. इसको आप अपने पेस पर बोलिए, थोड़ा स्लो या थोड़ा तेज, ये खुद आप डिसाइड करेंगे. You should sound natural on the day and that would really help you to score beyond 7. Thanks for watching the video, my dear friends, and bye-bye.